vast difference in cultural practices from one area of Kashmir to another. To chair this session, I invited Professor Satyabhama Rasdan. And she is a well-known Sanskrit scholar, and her area of specialization or research and study of linguistic development of Indo-Aryan languages and ancient scripts such as Brahmi, Sharda, and Takri. She has 9 published works to her credit, including translated works, besides 62 research articles. And the 2 speakers of this session are Dr. Gauri Shankar Raina. He's a noted Kashmiri Hindi fiction writer, playwright, and broadcaster. He has more than 15 published works to his credit, besides various short stories, plays, and articles published in prestigious literary journals. He was the founder-producer of programs like Aaj Savere, Evening Live Show, and Kitab Nama at Doordarshan, Delhi, and served as a head and control media center, IGNCA. And the second speaker of the session is Professor Ghulam Rasool Jan. He is an eminent Kashmiri writer and scholar. He has 3 published books to his credit, besides 50 research papers in Kashmiri literary journals. He has participated in more than 50 seminars and conferences at international and national and international levels. He is associated with literary organizations in Iran, Tajikistan, and India. He is a recipient of Junior Fellowship, President Award, Fakhruddin Ali Ahmed Ghalid Award, Emirates Fellowship, etc. So since just now I received the word from Kalakshetra, so the next session has to end by 3:30. So I request the speakers in this session to limit themselves to 12 to 15 minutes, not more than that, because we have to complete before 3 o'clock and the next session has to complete before 3:30. Thank you. Professor Satyabhama Rasdan. नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी ताम अहम प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे. Salutations are to Devi Sharda, who abide in the board of Kashmir. To you, O Devi, I always pray for knowledge. Please bestow on me the gift of that knowledge which illuminates everything from within. Respected Srinivas Rao ji, Secretary, Sahitya Akademi, Delhi. Distinguished scholars, my colleagues, and the scholars of this Kalakshetra Academy. I have been asked to limit my speech within 5 minutes. Now, in this session, light will be thrown on the different aspects of the cultural heritage of Kashmir. And we are having 2 distinguished scholars with us who will speak on the cultural heritage or cultural legacy of Kashmir. And today, I really feel honored to be here to speak on this issue on the eve of the Vitasta festival organized under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Besides, I also feel overwhelmed to be here because it gave me a chance to meet my colleagues after a long gap of at least 3 years. So in the inaugural session, as
Professor Ratanlal Hanglu ji said that culture is not a company-made entity, company-made object, which can be defined in a few words or in a few sentences or in a few paragraphs. In fact, culture has many different meanings. If we see from the point of view of a man of letters or a man of literature, he will define culture as an appreciation of good literature, as an appreciation of music, art, architecture, food, etc. While as if we see in the eyes of the, or if we ask a biologist, he will say that it is a colony of microorganisms or a colony of bacteria that grows normally in a laboratory petri dish. So there are different ways to describe the culture. However, in fact, I will say that culture is that complex whole of an ethnic society which encompasses music, fine arts, spoken language, written literature, art and architecture, it is customs, it is traditions, the capabilities as well as abilities that a man, he acquires from the society he lives in. And it has been said that this culture is a powerful tool for human survival, no doubt. But at the same time, it is a fragile phenomena. It is always in flux and flood. It is always in flux and ferment, and it is easily lost because it only exists in our minds. Whatever our art and architecture is, whatever our customs and traditions are, whatever our music, fine arts, etc., whatever, that is all the product of the human mind. And that is not these art, architecture, etc., these are not culture in themselves, although they are the reflections of the cultural ethos of a particular society. Now, the earliest description of Kashmiri culture is seen in the Nilmat Puran, which contains a lot of information about the ways of living in Kashmir. And we can say that if Raja Tarangini is important from the political point of view, Nilmat Purana is equally important for the socio-cultural, religious history of Kashmir. And it depicts, this Nilmat Purana, it depicts Kashmir as an old territory with its own ethnicity. It is socio-political, cultural, and economic organizations, with its own language, with its own dress, its own customs, its religious places, religious rituals, and religious beliefs. Now, according to Nilmat Purana, the original inhabitants of Kashmir were the Nagas, and then came the Pishachas, and after that the Manavas. And it has been proved in the light of the statements of the Nilmat Puran as well as other available literature like Mahabharata, etc., that the character of these Nagas, Pishachas, and Manavas, it has been proved as tribes. Now, regarding the socio-economic and economic organizations of our prehistoric society, Nilmat Purana says, according to Nilmat Purana, the society at that time was divided into four castes, major four castes, and these were like in the rest of the India, Brahmanas, Kshatriyas, then Vaishyas, and then Shudras. And the Nilmat Purana throws light on these four castes along with their characteristics and duties. Besides, it indicates the presence of other subcastes, and those were Aurabikas, that is the shepherds, and then Mallas, that is the wrestlers, then Natas, the actors, and the Nartakas, means the dancers. This division was according to the occupation, locality, and other kindred factors. Kalhana's Rajtaringni refers to the presence of several other low castes as well. And these are Nishadas, and then Kiratas, then Dhombas,
and Chandalas. Nishadas are basically, they were fishermen or the boatmen. Then Kiratas, they were the hunters who lived in the jungles. And the Dumas, they were the skilled musicians and dancers, etc. But Brahmana was an honorable class and high respect was generally shown to the Brahmanas. But the Shudras too were not considered as degraded. The humane treatment towards the servants and other socio-economically weaker people is a pleasant feature of social organizations of ancient as well as present-day Kashmir. The freedom that women enjoyed or even enjoy in modern-day Kashmiri society is something which one does not come across elsewhere in India. Now, ancient literature of Kashmir, including the Nilmat Puranas, supply ample information about the religious cults. Those were prevalent in prehistoric Kashmir. And some of these were based on the, or even centered on the Vedic gods like Rudra, like Vishnu, etc., while others have folk deities as their basis. Nilmat has proved the popularity of Naga cult in Kashmir, and Naga worship was one of the first forms of worships performed by the earliest settlers in Kashmir. Later on, Buddhism, Shaivism, and Vaishnavism made their significant progress in the region. King Gonan III is claimed to have studied the traditional method of Naga worship when Buddhism was the predominant religion of the region. Buddhism appears to have arrived in Kashmir during the 3rd or 4th century BC, and Kanishka and other Kushana rulers are assumed to have brought Buddhism to its pinnacle in the valley. Buddhism is, however, mentioned in the Nilmat Purana not as a separate cult, but as assimilated into Vaishnavism. However, the intermingling of the currents of different religious thoughts is seen clearly, and religion appears as a developing organism, absorbing fresh elements and giving up some old ones. The Nilmat Purana provides a long list of vratas, then utsavas, and other religious practices. Those were prevalent in ancient Kashmir. Some of these are similar to those which are mentioned in other Puranic works, while as others are observed only in Kashmir or are specifically, they are specific to Kashmir. Then music, dancing, drama, sports, and other means of recreation are the true mirror in which the unrestricted mind of Kashmiri people is reflected. The land of prehistoric Kashmir was thronged with ever-supportive and joyful people enjoying continuous festivities. Dances were performed on religious occasions, in social gatherings in honor of the seasons, as well as on agricultural festivals. Dramatic performances were common, and there are references in Nilmat Puran which indicate that there may have existed dramatic clubs for theatrical performances, and people would make gifts for the arrangement of a dramatic show. In the present Kashmiri society also, every festival and every ceremony includes dance called rope, performed by women, and there is damal, which is not so popular today. It was usually performed by men. Then a music called chakri in Kashmiri, and singing, vanun. A dramatic performance is called pathar in Kashmiri. And Band Pathar is the traditional folk theatre of Kashmir and is considered as old as Kashmir. In Band Pathar, artists in colorful costumes move from one place to another in groups and perform plays highlighting the social, economic, and political issues of the society in a satirical manner. Besides, Ladi Shah was also popular in Kashmir. The sports mentioned in Nilmat Purana
are garden sports, which were prescribed for friends and family members. Then there were water sports, which were prescribed for girls and women. And then playing with toys and birds tied to strings was an amusement for the children. Vastra, Ambar, Vasas, Vasan. These are the words which are used in Nilmat Puran for clothing in general. Then there is a word, Chinanshuk. Chinanshuk is used for the silk that was imported from China. And Kambal, it is used for woolen blanket. Then one more word is, which is very significant, that is Pravarna. Pravarna is referred to in connection with the festival of new snowfall. In the Mahabharata, the word Pravarna is mentioned as a dress offering protection against cold, and I assume that Kashmiri Pheran is most probably derived from Pravarna. Regarding ornaments, we have references to earrings, bracelets, crowns, and jewels. Regarding Kashmiri language, Kashmiri language, as assumed by the scholars, belongs to Dardi group, which I refute, because there is absolutely no such peculiarity in Kashmiri which we cannot derive from Indo-Aryan. So I assume that Kashmiri, even I have proved in my books that Kashmiri has Sanskritic inheritance. It has Indo-Aryan inheritance, plus it has borrowed vocabulary or even adopted vocabulary from Perso-Arabic sources which came to Kashmir during the 14th century AD. So this is what I assume. And besides this Kashmiri language, it has many dialects, it has regional dialects as well as social dialects. As regards the regional dialects, we have three types of regional dialects of Kashmiri. We have Kamraz dialect, which is spoken in the north of Kashmir, and then we have Maraz Kashmiri, which is the dialect, which is the variety of Kashmiri language, which is spoken in the southern part of the Kashmir. And then we have Kashmiri, which is spoken in the city or which is spoken in Srinagar proper of the Kashmir Valley. And this forum has got the privilege to be the standard forum of the Kashmiri. Then our Kashmiri language, it is further subdivided into the social dialects called the Muslim Kashmiri and the Hindu Kashmiri or the Pandit Kashmiri, but the source of the evolution is the same, that is Indo-Aryan origin. Then regarding the literature produced in Kashmir, we have all the 6 schools of Indian poetics which have been produced or which are born in Kashmir. We have Abhinav Gupta, we have Mamar's Kavi Shastra, we have Dhanya Lok, and then we have Rudrat, we have Bhama, we have Alankar Shastra. So all these, or we have Kshemendras or Chityavad. So all these 6 schools, they have been, they are born in Kashmir or they have been produced in Kashmir. And the poetic Abhinav Gupta's work shows how Kashmir's contribution to aesthetics remains unrivaled. Bharat Muni's Nati Shastra is an encyclopedic treatise on theatre, drama, music, dance, and literary traditions in Indian culture. The Buddhist literature, which reached China and Central Asia, was created in Kashmir. Finally, we reached the conclusion that Kashmir is a composite entity that has received and absorbed the cultures, regions, and people of diverse social, religious, and cultural groups. Thank you.
Now I request Dr. Gauri Shankar Raina to present his perspective on Kashmir culture. Respected Shri Rao Sahab, Rajmohan ji, Professor Hanglu Sahab, Professor Kaul, Griali ji, Agnishekhar ji, Satish Vimal ji, Professor Aijaz ji, and the chair, Satyabhama ji, and Professor Jan Sahab, scholars and distinguished guests. I am extremely grateful to Sahitya Academy for inviting me to this seminar, which is focused on Kashmir. I started writing this paper in English initially, but while writing, I realized that Alankar Shastra and other things which I wanted to mention to and I wanted to refer to, I was not very, I thought I won't be able to explain those Alankaras, and I wanted to refer to Abhinav Gupta and Anand Vardhana also, which I have included some. But then I restarted writing this article and I wrote in Hindi. But I am sorry for this, but I didn't know that. And I'll read and I may skip some of the pages. It's a long article. So anyway, I'll start. I have given it a title, Kashmiri Sanskriti, Parampara और प्रथाएं. कश्मीर सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है, which has been repeated since morning. नीलमत पुराण जो सातवीं शती में रचा गया है, कश्मीर की संस्कृति और प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं और प्रथाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है. इस क्षेत्र को वितस्ता कहा गया है, यानी वो स्थान जहां वितस्ता बहती है. अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक भारत में लिखा है कि कश्मीर झेलम यानी वितस्ता नदी के दोनों किनारों पर बसी है. ये नदी जीवनदायिनी है और इसके साथ साथ बहती चली आई है एक संस्कृति जो अद्भुत है. इसके किनारों पर वसंत उत्सव, व्यथत्रुआ, वितस्ता त्रयोदशी आदि कई उत्सव मनाए जाते रहे हैं और अभी मनाए जा रहे हैं. मुझे याद है कि शिवरात्रि के उत्सवों पे जब हमारे बाकी मोहल्ले वाले और सब लोग होते थे, वो सारा उत्सव घाट पे होता था और वो जो अखरोट होते थे वहाँ बांटे जाते थे. इस भूमि पर भारतीय काव्यशास्त्र के प्रारंभ काल के प्रमुख आचार्य जन्मे हैं. आनंद वर्धन ने विश्वविख्यात ध्वन्यालोक की रचना यहीं पर की. आज से 1100 वर्ष पहले की थी. दर्शन, नाट्य लेखन, व्याकरण तथा इतिहास लेखन में कश्मीर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. चरक संहिता लिखने वाले आचार्य चरक भी यहीं रहते थे. अभी चरक के बारे में किसी ने अभी तक सुबह से बोला नहीं, लेकिन वो यहीं रहते थे. चरक संहिता उन्होंने यहीं लिखी थी. अभिनव गुप्त द्वारा भारत नाट्यशास्त्र की टीका, पतंजलि के महाभाष्य पर टीका तथा शैव दर्शन पर रचे गए अनेक ग्रंथ इसी घाटी में लिखे गए हैं. कश्मीरी संस्कृति और इतिहास का प्रभाव न केवल अपनी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रहा, बल्कि इससे बाहर भी दूर तक फैला रहा. यही कारण है कि प्राचीन काल में संस्कृत की उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से यहाँ विद्वान आते थे. ह्यून सॉन्ग 631 ईस्वी में कश्मीर आए और जिस पर हांगलू साहब ने भी सुबह उसकी बात की थी, वो यहाँ 2 वर्षों तक रहे थे.
उन्होंने भी कश्मीर के प्रभाव को रेखांकित किया है। दर्शन, साहित्य और नाटक के साथ ही संगीत में भी यहाँ नैपुण्य प्राप्त था। जैसा कि नीलमत पुराण में वर्णित है, काव्य परंपरा के साथ ही संगीत को सुनने की भी एक समुचित व्यवस्था रही है। श्रोतव्यम गीत वाद्यम च तथा सेवम च मंगलम, नीलमत पुराण 467। गीत तथा वाद्य यंत्रों के, इसका अनुवाद इस तरह होगा, गीत तथा वाद्य यंत्रों के संगीत को सुनना चाहिए और मंगल कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। आज भी बांड कलाकार सुरनई, ये एक शहनाई जैसा वाद्य यंत्र है, और ढोल नगाड़ा लेकर शुभ अवसरों पर मंगल कामनाएं देने आते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि बांड नाटक का मस्खरा संस्कृत नाटक के विदूषक का ही परिवर्तित रूप है, और यवनिका का प्रयोग भी उसी परंपरा का द्योतक है। यवनिका भांडपत्र पे भी इस्तेमाल होती है। आचार्य बिल्हन ने विक्रमादेव चरित में लिखा है कि नृत्य नाटकों का स्तर इतना अच्छा होता था कि उनके सौंदर्य की चर्चा विश्व भर में होती। उस समय सामाजिक उत्सवों पर नाटकों का मंचन होता था। कल्हन ने महाकवि चंद्रक के नाटकों की प्रशंसा की है और उन्हें बहुत ही लोकप्रिय बताया है। राजा अवंती वर्मा के समय शिव स्वामी ने कई लोकप्रिय नाटक और नाटिकाएं लिखी थीं। अवंती वर्मा के पुत्र शंकर वर्मा के समय 9वीं सदी में जयंत भट्ट हुए थे। उन्होंने आगम आडंबर नाटक की रचना की थी, जो पहले एक आयोजन में ही खेला गया था। इस नाटक के पात्र दर्शन के विषय में चर्चा करते हुए नजर करते आते हैं, मतलब दर्शन की बात बताने के लिए भी नाटक का प्रयोग किया गया था। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि नाटकों की रचना करना और उनका मंचन उस परंपरा का हिस्सा था जो तब से अब तक निरंतर चली आ रही है। परंपराओं और प्रथाओं ने जहाँ संस्कृति का संवर्धन किया, वहीं कश्मीरी साहित्य की श्रीवृद्धि भी की। जयंत भट्ट के नाटक आगम आडंबर में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत का भी प्रयोग मिलता है। यहीं से कश्मीरी भाषा के विकास के साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। कश्मीरी भाषा ने संस्कृत पाली के कई ध्वनि तत्वों को अभी तक सुरक्षित रखा है। इसमें अपनी विशेषताएं हैं। फिर हमें छुम संप्रदाय शीर्षक से एक पांडुलिपि मिलती है जो 10वीं 11वीं सदी की है। इसके पद्य ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि कश्मीरी अपनी विकास यात्रा में प्राकृत अपभ्रंश की अवस्था से गुजरी है। 13वीं शताब्दी में शितकंठ द्वारा रचित महानय प्रकाश सामने आता है, जो उस समय की भाषिक स्थिति को सामने रखता है। इसके बाद 14वीं शताब्दी में कश्मीर की महान कवयित्री लल्लेश्वरी के पदों की गूंज सुनाई देती है। ये पद श्रुति परंपरा से चले आए हैं। कश्मीर के लोक संस्कृति में इन पदों को वाक कहा जाता है और ये विशिष्ट महत्व रखते हैं। इन पदों को पहली बार राजानक भास्कराचार्य ने 18वीं शताब्दी में क्षमा कीजिए लिपिबद्ध किया था। ललदत के बाद 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कवि शेख नूरुद्दीन नुंदऋषि ने कश्मीरी पदों की रचना की, जो लल्लेश्वरी के वाकों जैसी ही थी। इस कवि संत के शिष्यों ने इन पदों को ऋषिनामा में संकलित किया है। इसके पश्चात 15वीं शती में अवतार भट्ट द्वारा रचित बानासुर कथा सामने आती है, जिसमें कश्मीरी भाषा का व्याकरणिक ढांचा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर 16वीं शताब्दी में हब्बा खातून और 18वीं शताब्दी में अर्निमाल गीत काव्य का विकास करते हुए नजर आते हैं। 19वीं शती में महमूद गामी तथा परमानंद अपनी अपनी अलग भाषा शैलियों के साथ कविता प्रस्तुत करते हैं, तो 20वीं सदी में दीनानाथ नादिम और रहमान राही आधुनिक जीवन की विसंगतियों को नए अंदाज में पेश करते हैं। कश्मीर के अलंकारवादियों तथा काव्य शास्त्रियों आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त व मम्मट जैसे आचार्यों ने
जो अन्वेष तथा अग्रणी कार्य किया है वो आगे की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। बामा के काव्य अलंकार में यद्यपि अलंकार और रस का विवेचन हुआ है, तो आचार्य उद्भट ने अलंकार सार संग्रह की रचना की तथा रुद्रट ने अपनी रचना में नए अलंकारों का समावेश किया। आनंदवर्धन ने अपने से पहले की साहित्यिक मान्यताओं का विवेचन करके एक नया ध्वनि सिद्धांत दिया, जिसमें शब्द और अर्थ के बजाय अर्थ की ध्वनि महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके बारे में सुबह भी बात हुई थी। अभिनवगुप्त ने आगे चलकर आनंदवर्धन के इसी ध्वन्यालोक पर टीका लिखी और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र पर भी अभिनव भारती शीर्षक से टीका कर लेखन किया। वस्तुतः आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त दोनों ही आचार्यों ने भारतीय काव्य शास्त्र को समृद्ध किया। आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक का उत्कृष्ट अंग्रेजी अनुवाद आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व के कृष्णमूर्ति द्वारा किया गया है। इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में प्रकाशित उसके एक अंश की भूमि से यहाँ कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं। ये कोट, द थ्योरी proposed by Anandvardhana is known by the name Dhwani, which means the suggestive quality of the poetic language. Thank you. I'll start it again. Quote, the theory proposed by Anandvardhana is known by the name Dhwani, which means the suggestive quality of poetic language. He has the distinction of introducing in Sanskrit poetics the exposition of poetic language, but more important is the contribution in terms of turning the focus of critical discussion from the outward linguistic style and poetic embellishment to the more complex issue of linguistic structure in poetry. In Anandvardhana's view, it is the structure which is the total effect of suggestive quality of language, which distinguishes poetry from the ordinary usage of language. Unquote. आनंदवर्धन के इस ध्वनि के सिद्धांत से इसका अनुसरण कवियों, नाट्याचार्यों तथा विद्वानों ने किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीरी कवि रहमान राही भी इस सिद्धांत से प्रेरित रहे और उन्होंने अपनी एक लंबी कविता बे आवाज़ गूंज, जिसका अनुवाद मैंने किया था, बे आवाज़ गूंज आनंदवर्धन को समर्पित की है। तंत्रालोक के रचयिता अभिनवगुप्त का भारतीय आचार्यों में प्रमुख स्थान है, न केवल इसलिए कि उन्होंने ध्वन्यालोक की टीका लिखी है, बल्कि इसलिए भी कि भरत नाट्य शास्त्र पर लिखी अपनी टीका पुस्तक अभिनव भारती में उन्होंने रस संबंधी विचारों की स्पष्टता प्रदान की है। उनके रस सिद्धांत पर J.A. मैसन तथा M.V. पटवर्धन ने शांत रसा एंड अभिनवाज फिलॉसफी में विस्तार से व्याख्या की है और उसी की परिचयात्मक टिप्पणी में G.N. देवी लिखते हैं, कोट, द कॉन्सेप्ट ऑफ शांत रसा बाय अभिनव गुप्ता defended with the extraordinary logical rigor reflects his visionary poetics. He argues that 8 rasas are like 8 gods and the Shant rasa is like their highest center. But this insistence on predominance as the highest value in literary aesthetics also reflects Abhinava's realization of the need to modify Bharat's formulation to suit the changing cultural ethos. Unquote. नाट्यशास्त्र, नाटक खेलने वाले अभिनेताओं, नाटक की रचना करने वाले कवियों तथा नाटक समझने वाले दर्शकों के लिए लिखा गया था और जब इसकी व्याख्या अभिनव भारती में प्रस्तुत हुई तो समकालिकता का ये समन्वय बाद के आचार्यों तथा नाटककारों का मार्गदर्शन बना। पूर्ववर्ती आचार्य मानते थे कि ये समाज की शिक्षा देने के लिए लिखा गया है, लेकिन अभिनवगुप्त ऐसा नहीं मानते थे। संस्कृत काल, प्राकृत काल
अपभ्रंश काल, फारसी काल और वहाँ से आधुनिक काल तक आते आते भाषा और साहित्य का स्वरूप बदलता रहा और नई तथा विधाएं पनपती रहीं। वस्तुतः कश्मीरी भाषा का साहित्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तुलना में अधिक प्राचीन है और इसका कई शताब्दियों की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने व कश्मीरी संस्कृति की प्रकृति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी मौखिक परंपरा ने जहाँ जन जन में पुरानी कथाओं, गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं तथा लोक नाट्य के कथन जीवित रखे हैं, वहीं साधारण लोगों की स्वाभाविक सामाजिक परिस्थितियों से उपजी कविताएं और गीत सदियों से लोक चित्त में बसाए हैं। फोक लिटरेचर में उनका काफ़ी असर रहा है। इन गीतों का आनंद प्रमोद के क्षणों में विशेष महत्व रहा है। उत्सवों और संस्कारों में ये गीत वनवन और रोव के रूप में गाए जाने की परंपरा है। इसी परंपरा से प्रेरित एक प्रसिद्ध कवि साहिब कौल ने गीत विदा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। सूफी परंपरा के कवि शाह गफूर ने कश्मीरी सूफीवाद के अंतर्गत कई गीत लिखे। अपने एक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध गीत सुहम सू में वे ईश्वर की तलाश का आग्रह करते हुए कहते हैं कि उसकी तलाश में व्यक्ति स्वयं ही ईश्वर हो जाता है और ईश्वर होने का मतलब होता है मन का नियंत्रित होना। फारसी काल में महाकवियोचित विषयों से संबंध रखने वाले मसनवी काव्य का उत्कर्ष हुआ। कुछ चर्चित मसनवियाँ हैं नल दमन, सोहनी महवाल, चंद्रबदन और मकबूल शाह क्रालवारी का गुलरेज। रसूल मीर ने क्लासिकी फारसी गज़ल की शैली का प्रचलन किया, जिसके फलस्वरूप कश्मीरी गज़ल आधुनिक युग में लोकप्रियता प्राप्त कर गई। इसके साथ ही उस दौर में भक्ति काव्य की एक धारा बह चली, जिसमें प्रकाश राम, परमानंद और कृष्णदेव राजदान ने रहस्यवाद और आध्यात्म को ऐसे प्रस्तुत किया जिसकी कोई मिसाल नहीं है। लीला काव्य आज भी रचा जाता है, मगर शिवलगन जैसी गीत कथा की सृजनात्मकता उनमें नहीं मिलती। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में वे सभी रीति रिवाज जो कश्मीरियों के हैं और अनुष्ठान कथा में गुथे गए हैं जो कि कश्मीरी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे क्रूल खारून। क्रूल खारून मीन्स द्वार पर पारंपरिक शैली में चित्र और बेल बूटे बनाना। द्वार पूजा, द्वार पर दूल्हे से पूजा कराना। पोष पूजा, दुल्हन और दूल्हे पर फूलों की वर्षा करना। कृष्णदेव राजदान के गीत की एक पंक्ति उदाहरण के तौर पर यहाँ प्रस्तुत है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्रूल खोर लब गई नबचे तारई, वारे करियो दार पूजा। क्रूल खोर लब गई नबचे तारई, वारे करियो दार पूजा। हमने द्वार पर चित्र बनाया जैसे दीवारों पर तारे उतर आए। बड़े उत्साह से करते हैं हम आपका द्वार पर स्वागत और करते हैं आपकी पूजा। कश्मीरी मुसलमान समाज के लोग भी अपने तरीके से उत्सव मनाते हैं और ऐसे अवसरों पर उत्सव के अनुरूप गीत गाते हैं, जैसे लचबच्छस नावई यारा गसवई दिव्ये, हा गस्तो कावई म्यान्यवंतस कावई। मुझे खांसी आई, फिर से पढ़ता हूँ उसके। लचबदीच्छस नावई यारा गसवो दिव्ये, हा गस्तो कावई म्यान्यवंतस ग्रावई। इसका अनुवाद, चलो मित्रों चलो, उत्सव पर चलने की तैयारी करो, उसके तो लाखों नाम हैं। एक आगा जा तो उसे हमारी फरियाद कर, चल उत्सव पर चलने की तैयारी कर। कथा सरित सागर के समय से ही कथा सुनाने का और कथा गीतों को गाए जाने का चलन रहा है, विशेषकर तब जब घाटी बर्फ से ढकी होती है और भीतर महफिल जम जाती है। आज के डिजिटल युग में भी अब किसी गांव में दास्तानें सुनाने वाले मिल जाते हैं। पीछे ही मैं मिला था एक दास्तान को से। सांस्कृतिक विपुलता तथा परंपराओं में रचित गीतों, कथाओं, नाटकों,
अनुष्ठानों और लोक रीतियों के कारण समूचे कश्मीर मंडल की संस्कृति अद्वितीय है। सांस्कृतिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की परंपरा और संस्कृति न केवल अपनी समग्रता के कारण बल्कि लोक में इसकी व्यापकता के कारण विशिष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ पेजेस नहीं पढ़े, बीच में स्किप किया, तो उसके लिए क्षमा करें। तो इसमें थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Now I request Professor John to present his بنام خداوند جان و خرد که از این اندیشه برتر بر نگذرد. I am highly thankful to Satya Academy, especially Mr. Rao and Kalakshetra Academy for their hospitality, who gave me a chance to see my old friends and brothers. Tishmi Ahmadyan, Professor Hongl Sahab, Satya Bama Rajdan, Gauri Shankar ji, and my colleagues, Sitish Vimal, Dr. Ejaz, other distinguished sitting in the hall. My very good afternoon. My theme of my paper is Iranian influence in framing and reshaping of Kashmiri culture and society. This is a very huge topic, and my thought paper is also huge and enthusiastic, but I will sum up it some major portions. I'm sorry not to read out all paper, but some major portions I will present before you this august body. The Iranian and Indian civilization, one of the earliest and creative civilizations, have played a vital and dynamic role in formation and shaping of world history. Their cultural heritage are very rich and luminous. The relations between these two civilized countries are very old, and both had close affinity since Vedic Avestan time. From the ancient past, their mutual endeavor in respect of trade and commerce is widely known. The political relations between Iran and India and the exchange of ideas and culture between the two nations is not hidden. Till the end of 16th century, Kashmir had played a vital role as an independent and powerful domain in the Indian subcontinent. It has its separate identity. Kashmir, which is known as Iran-e-Saghir, the Little Iran, has had its relations and contacts with Iran and other Central Asian countries. The paradise on earth, Kashmir is not only famous in the world due to its beauty and lust of nature, but it has also gained its name and fame as a paradise of world's rich culture heritage. The Kashmir is considered as one of the world's earliest cultures. After the advent of Islam in Kashmir in the 14th century, the Iranian played a very dynamic and very authentic and dynamic role in the formation, shape, and establishment of Islamic culture in Kashmir. It gave birth to the various religious, philosophical, socio-cultural, and literary movements. It has been rightly said, it has been said by the Stein, who is a translator and commentator of Raj, that Islam made its way into Kashmir, not by forcible conquest, but by the gradual conversion, for which the influx of foreign adventurers, both from South and Central Asia, had prepared the ground. The Iranian scholars, Sufi saints, and traders influenced and played a role in the transformation of Islamic Iranian culture in Kashmir.
The change of religion changed the entire horizon of Kashmir, its culture, history, language, and way of living. Persian language was the basic source and the mechanism behind these language changes through the establishment of Iranian industries, art and architecture, literature, literary symbols, and mythology. Let us skip here. In Kashmir's socio-religious, cultural, and literary history, a big event took place by arriving Hazrat Mir Said Ali Hamdani, best known in Kashmir as Shahi Hamdan, and his son Mir Muhammad Hamdani during the reign of Sultan Qutbuddin. On their arrival, a big change took place on every sphere of life. By their endeavors, Islamic Irani culture emerged on every sphere of life: dress, food, language, and literature, architecture, festival, customs, traditions, music, tourism, trade, arts, and crafts are worth mentioning. Mir Ali Hamdani and his son and their close associates arrived in Kashmir as a missionary zeal. They not only preached religion Islam and sophisticated practices to the common masses, but gave a universal message of love, tranquility, brotherhood, and tolerance, etc. The Kashmiri people still adhere with these messages. A Sufi saint has a close affinity with God, and love is his passion. Their religion is a religion of love called Ishq. So was the teaching and preaching of revered aforesaid Sufi saints and their companions. In the ancient past, Kashmir has remained a seat of learning, a higher seat of learning, land of rishis and munis. It had passed through the phases of different religions and cultures. On the advent of Islam in Kashmir, it added a new feather in this crown and is called a Pirwaya Rishwar, that is Sufi, a garden of Sufis and Rishis. I will skip here. It is evident that Islam came into Kashmir under the cover of mysticism. It was preached there by the saints and religious leaders who were associated with one or other Sufi order. Emergence of Islam was not only a change in religious movements, but it gave a new dimension to Kashmiri art, culture, society, politics, and linguistics. It compiled far-reaching revolutionary effects on the Kashmiri people. Allama Muhammad Iqbal Lahori, in his glorious tribute to Shah Hamdan, has pointed out to these factors. Sayyid Sadat Salar Ajam, Dasteo Memar Takdir Umam, Khatara Shah Darya Astin, Dad, Ilmo Sannato Tahzibuddin, Farid, Mard Iran Sagir, Ba Hunar Hay Gharib Dil Pazir. These verses reveals that Mir Said Ali Hamdani gave education, industries, civilization, and religion to Kashmiri people. With the emergence of wonderful arts and crafts, the land of Kashmir turned as Iran Sagir, that is Little Iran. It would not be out of place to mention here that the handicrafts of Kashmir is world famous. The Kashmiri shawl, carpets, paper mache, embroidery, sojni, creval, and woodwork carving has given a boost to the economy of common people. With the retirement of Mir Said Ali Hamdani and his son Mir Muhammad Hamdani to their homeland Khatlan, on the request of rulers of Kashmir and on behest of their masters and mentors, some prominent figures stayed in Kashmir to provide education in the religion of Islam. Among them, some wrote the books for the new entrants. They are numerous. They are numerous. However, I have given you some brief account about some, but I will skip it here. It will become so much lengthy. In making concordant to this new course of civilization, culture, and history,
Persian language has a central position because the foreign religious leaders and great Sufi saints for their missionary program made the use of Persian language. The schools and monasteries were established, libraries came into being. In these centers of learning and wisdom, Persian language became the language of contact at public level. And the Kashmiri people wholeheartedly accepted it. With the patronage of kings, Persian language became official language of Kashmir, and it had a 700 years history in Kashmir. Sure, the script got changed by Persian Nastaliq. Persian language is a language of love, which teaches tranquility, brotherhood, humanity, harmony, and tolerance. It crossed over to this side without the borders. And as per sayings of Maulana Rumi, Tu barai fasal kardan amadi, nai barai fasal kardan. You have, hey man, oh man, you have come for passionate love, not for discord. Near about 60% Persian words are developed in Kashmiri language. Kashmir has produced many Persian poets, prose writers, historians, biographers, and scientists who have created abundance of literature on different subjects. The treasure house of Kashmir, whether personal and official, are full of evidence. Kashmir has also pride of creating the Jami Sani Maulana Sheikh Aqub Sarfi, Firdausi of Kashmir Wahapare Hajni, Gani Kashmiri, Fani, Shaikh, etc. Till recent past, Kashmiri people above caste and creed used to learn Gulistan and Bostan of Sheikh Saidi Shirazi. The universal message of brotherhood and humanity of Sheikh Saidi Shirazi is that Bani Adam azoi yak digarand, Kedar ofrinish ziyak javarand, Agar uzve badarat o varad ruzgar, Digar azuhara namanat karar, Tuch az mehnati digaran bigami, Nashayat ki namat nehand admi. That is, I will translate it. A human being is like parts of body who have been created with one essence. If there is a pain in any part of the body, the other parts become restless. Oh man, why are you unaware of other sufferings? Do you not want that you should be called human? The message which has been accepted by the world body and is evident at the UN headquarters still reveals in the minds and hearts of Kashmiri people and act upon it by the virtue of learning of the great luminaries of Kashmiris are not inhuman in mankind. Regarding the development of Persian language and literature in Kashmir, some examples where I have quoted some examples, I will not read out those. By ascending Sultan Zainul Abidin, best known as Barsha, on the throne of Kashmir, Persian language and literature got a great momentum. And his reign is compared with the Ghaznavid of Persian, the Ghaznavid period of Iran. The Sultan Zainul Abidin ruled over Kashmir for near about 52 years. The entire period is quite settled to be the golden age in Kashmiri society. During this period, there was tremendous progress in every sphere of life. Shirivara, the contemporary historian writes, there was not a branch of learning of art and literature or fine arts which did not become celebrated in the world during the reign of Sultan Zaina. The Sultan Zainul Abidin was very fond of poetry and preceptor of poets. He had a good command on the Kashmiri, Persian, Tibetan, and Hindi languages. He usually used to say the verses under the nom de guerre of Qutbi. There are some verses attributed to him and is recorded in the Kashmiri history. The court of Sultan Zainul Abidin was full of poets and men of learning. Mullah Ahmad Kashmiri was a poet literate in the court. Mullah Nadri, Mullah Jamil, Mullah Fatih, Mullah and others are associated with the court. Whatever I want to say here, that which is a commendable job of Sultan Zainul Abidin, that is, a translation bureau was established by Sultan, which was associated with the university, which the Sultan created near his palace at Naushad, Srinagar. The eminent scholars of that time were associated with the bureau. Most of the Sanskrit books were translated into Persian. I will endorse here the idea given before this August budget in the morning session by Professor Honglu, that Sahitya Academy should establish a translation bureau for the translation of Sanskrit books
And if it be possible, then Persian books also. So the message will be going to throughout the world. And most of the Sanskrit books were translated into Persian. In this connection, the Shrivara says, the king caused translations of the various Shastras to be made by those who know Sanskrit and the Persian. The king caused Dasavatra and Rajtarangni, the book of kings in the Sanskrit language, to be rendered into Persian. So it was the first translation of Rajtarangni made during the reign of Sultan Zainul Abidin. Persian language being passionate with love and tranquility, it attracted more and more people, even Panditas and Brahmanas of Kashmir. During the reign of Sultan Zainul Abidin, the Panditas of Kashmir were very eager to get the education and training in Persian language. The scholarships and special grant in aid was provided to those who opted Persian as language. The Sultan Zainul Abidin was fond of music also, and this art was promoted during the reign of Sultan. It is said that the king invented some instruments of music, Mullah Hassan Udi and Mullah Jamil were the prominent musicians of the court, and both hailed from Iran. We will skip here. Sultan Hassan Shah, the descendant of Sultan Zainul Abidin, was also fond of music. It is said that 1,200 musicians and qawwalas were associated with his court. The aforesaid Mullah Hassan Udi and his son Mullah Muhammad Udi had a great association with the Sultan. The both had an authority in signing oud, a musical instrument. The two gave promotion to Iranian music and promoted the maqamatas or ragas in the Sufist music, which later became a part and parcel of Kashmiri Sufistic music. The Chak dynasty ruled over Kashmir for about 32 years. During this period, many men of learning poets visited Kashmir. Baba Talib Isfahani is prominent among them. Sultan Hussain Shah Chak and Yusuf Shah Chak were fond of poetry and mentor of poets and men of learnings. They himself composed the verses. Yusuf Shah Chak had a good command on Persian, Hindi, and Kashmiri languages. Some verses can be traced out in the history. He was a fond of music and composed many maqams or ragas in music. Pandit Birbal Kacharu, the historian in his history, attributed many maqamas which Sultan himself composed. The Sultan Yusuf Shah is considered a symbol of Kashmiri and Iranian music. He had so much command on music that he once pointed out a mistake committed by Tansin in the court of Akbar when he was playing a musical song. Four great poets, I will conclude it. Four great poet literators of the Mughal period who hailed from Iran are buried in Srinagar, and the place is known as Mazar-e-Shura at Dalgate, Srinagar. There are yet so many aspects to take into consideration, but to paucity of time, I will sum up my presentation with the remark that the Kashmiri may have also imprinted certain footprints which needed to be researched upon. Thank you very much for your help. Thank you. Madam, Katham. Thank you very much. All the three speakers in the session, they presented different dimensions of multicultural society that is Kashmir. And out of this, such multiculturalism arise not only diverse values, but also that various elements of society that make up cultural components. So thank you very much, all of you. Now we will commence the next session. Thank you. Which?
From morning, we have been witnessing excellent presentations on various aspects of Kashmiri culture and literature. And now, there are various ways in which a culture of the community gets expressed through language, through literature, through paints, through dance, music. So, yeah, all kinds of art forms lend themselves, make these cultural components amenable for expression. So to present his views on this, and also there will be a valedictory address, I invite Sri Agnishekhar to come to the dais. He's an eminent poet. He has 8 poetry collections to his credit, besides several editor and translator works. His writings have also been translated into different Indian languages, and he himself translated the poems of various reputed Kashmiri poets into Hindi. A feature film, Sheen, was made on one of his short stories. He is a recipient of Hindi Lekhak Puraskar from Central Hindi Secretariat, Girja Kumar Mathur Puraskar, Best Book Award from Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages. So I request Sri Agnishekhar to address this gathering on various forms of expressions of Kashmiri. नमस्कार। सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी के सचिव हमारे राव साहब और इस सभा में उपस्थित विद्वान मित्र, विदुषियाँ और छात्र, इन सबको बधाई देता हूँ कि आपने वितस्ता महोत्सव का आयोजन किया और एक अनूठी कल्पना है। I congratulate you, sir, for conceptualizing this mega event known as Vitasta Festival. Because what Vitasta is to Kashmir, Ganges and other rivers are to rest of India. सवेरे से जितने भी सत्र मैंने देखे, मैं ध्यान से सबको सुन रहा था। ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहता नहीं है जिस पे बात न की गई हो, चाहे कर्सरी चाहे डेप्थ में। और इनॉग्रल में हमारे मित्र इतिहासकार, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर रतनलाल हांगलू जी ने एक पूरा स्पेक्ट्रम जो हमारे सामने रखा, वो वैश्विक था। इट वॉज ग्लोबल एज वेल एज लोकल, with specific reference to Kashmir culture, civilization, philosophy, poetics, etc. उसके बाद उसी में हमारी बहन गरियाली जी का भी उद्बोधन जो था, बहुत ही मेस्मराइजिंग था। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास इसकी प्रति है। इसे मैं ध्यान से फिर से पढ़ूंगा। बहुत उन्होंने भी अपना विषय बहुत विस्तार से रखा, हर लेवल पे रखा। और एक से एक विद्वान आपने इनवाइट किए थे, उसमें हमारी 3 विदुषियाँ, डॉक्टर अद्वैतवादिनी कौल, डॉक्टर सत्यभामा राजदान और मैम गरियाली जी का नाम तो मैंने लिया। और उसमें आपने 3 खिड़कियां खोली उस पहले सत्र में। एक खिड़की से हमने कश्मीर को देखा बौद्ध दृष्टि से, कश्मीर और बुद्धिज्म, कश्मीर में बुद्धिज्म, कश्मीर से बुद्धिज्म और इंट्रैक्शन। फिर कनिष्क की जो बौद्ध सभा, महायान का बनना, थेरीवाद, कुमारजीव तक। और कुमारजीव के बारे में मैं यहाँ इतना ही जोड़ना चाहूँगा जो नहीं कहा गया। कुमारजीव पे हिंदी के बहुत बड़े कवि कुंवर नारायण जी ने
एपिक लिखा है, महाकाव्य प्रबंध है वो, कुमार जीव, पढ़ना चाहिए। जब जब हम विश्व में अनुवादों की बात करें, कुमार जीव जैसा हमारे पास अप्रतिम अनुवादक नहीं है कोई। विस्तार से बात खूब हुई यहाँ। और अरब में, अरब देश में और यूरोप में जिन्हें बार्मिक कहते हैं, देवर कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम कश्मीर एंड एज वेल एज बामियान, देवर बुद्धिस्ट प्रमुख्स, उनको प्रमुख कहते थे। देवर एनस्लेव्ड, नॉट किल्ड, टेकन टू टर्की, एंड उन्हें कहा गया कि आप ट्रांसलेशन करो। और वहां से पूरे यूरोप में आपको जो बार्मिकाज हैं, दे आर कश्मीरी पंडित प्रमुख्स, बुद्धिस्ट थिंकर्स। और क्योंकि वितस्ता की बात है तो मुझे कहना चाहिए, यहां हुई है बात, वितस्ता इज द इनकारनेशन ऑफ गॉडेस सती। नीलमत पुराण रिकॉर्ड्स, सती देवी नदी भूतवा कश्मीरायाम विनिर्गतः। ये जो कश्मीर में वितस्ता बह रही है, ये साक्षात सती है। नदी भूतवा, नदी बनके। और यहां मेरे मित्र गौरी शंकर ने वैतस्तिका का वर्णन किया। वैतस्तिका इज ए जियोपॉलिटिकल denomination for Kashmir in Mahabharata as well as Vishnu Dharmottar Purana. Land belonging to Vitasta is Vaitastika. और ये वितस्ता जो है एंशियंट सप्त सिंधु की, वन ऑफ द 7 rivers of सप्त सिंधु इज वितस्ता। वही वितस्ता, इट्स अ वेदसी इन संस्कृत। यहाँ संस्कृत की विदुषियां बैठी हैं, क्षमा करें अगर मैं कुछ गलत हो जाऊं। वेदसी मीन्स ए मेजर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज वेतसी। डिराइवेटिव ऑफ वेतसी इज वितस्ता। जब कश्यप ऋषि ने एज पर लेजेंड, एज पर महात्म्य, एज पर नीलमत पुराना, एज पर वितस्ता महात्म्य, कश्यप ऋषि से रिक्वेस्ट की फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल इन न्यूली बोर्न कश्मीर आउट ऑफ सतीसर, पानी चाहिए। तो है ना, हमारे रघुवीर साहब हिंदी के कहते हैं, पानी पानी बच्चा बच्चा मांग रहा है हिंदुस्तानी। पानी चाहिए। तो शिव ने अपनी कंसर्ट उमा से, सती से या पार्वती से कहा कि तुम निकलो। तो उन्होंने कहा मैं कितना निकलूं, ये तो फिर डूब जाएगा, इतना निकलूंगी। सो उन्होंने त्रिशूल से स्ट्राइक किया। ये जो आपका पांचाल पर्वत है, जिसे आज पीर पंचाल कहते हैं, ओरिजिनली इट इज प्रवर पंचाल, नॉट पीर पंचाल। पीर तो बाद में बहुत जुड़ा है कोई, इट इज प्रवर पंचाल। That place is known as Vyathuvatur in Kashmiri and Vitastatra in Sanskrit. और ये जो वितस्ता बही है, each and every river has a legend, has a mythology linked with it. And in Neelamat Purana, there are mentions of 60 rivers of Kashmir and Madhya Desha. Madhya is present day Jammu and adjoining. We have Godavari in Kashmir. We have all rivers जो आपके रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो कश्मीर में भी हैं। और कश्यपा जो है, कश्यप खुद कहते हैं, आई एम द फाउंडर ऑफ कश्मीर। जब सारी नदियां, जब देवियां आती हैं टू विटनेस बर्थ ऑफ कश्मीर, तो उनके बाद उनको कहता है कश्मीरा नाम, श्लोक है नीलमत पुराण में, वै निर्मिता मया, ये मैंने बनाया है। दिस इज वन डेफिनेशन। कश्मीर की
जो नॉमेनक्लेचर जो कश्मीर है, इसके 2-3 डायमेंशंस हैं। एक तो जियो पॉलिटिकल भी है। कमवारी हरिना या कमवारी हरिना वीर, जब पत्थर तोड़ करके पानी को बाहर निकास किया, जो पृथ्वी उगी, बनी, पनपी, was known as Kashmir. This is one. और ये इसका एक साइंटिफिक हो सकता है, दूसरा लीजेंड हो सकता है। यहाँ बहुत अच्छा सुझाव आया कि महात्म्यों पर काम होना चाहिए। हांगलो साहब ने कहा, बहुत अच्छा कहा, क्योंकि कश्मीर में अभी जितने भी महात्म्य बचे हैं, पहले बहुत थे। Unfortunately, Kashmir civilization and Kashmiri culture has seen devastations post 14th century. उसके लिए हमको ज़्यादा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हमको बहरिस्तानी शाही पढ़नी चाहिए, ज़खीरातुल मुल्क पढ़नी चाहिए, जो सैयद अली हमदानी ने लिखी है, डूज एंड डोंट्स फॉर न्यू कन्वर्ट्स। यहाँ जो मनकबन मनाजात पढ़े जाते हैं, देवर बुद्धिस्ट, बौद्धों की थी वो परंपरा। तब वो बारामूला उनके पास गए, जो न्यू कन्वर्ट्स आपने बनाए हैं, ये तो अभी भी घंटिया बजाते हैं, उनको इनको लेने दो। ज़खीरातुल मुल्क आई एम रेफरिंग टू। एंड देन तोहफतुल अहबाब, all 3 treatises are written by Muslim chroniclers. They clearly say in glory कितना जो वैभव है कल्चर का, iconography का, temple architecture, they were all destroyed, razed to ground. खत्म हो गया। उस खत्म होने के बाद भी जो एक जीवट है कश्मीर में, फिर से रिवाइव होने का, फिर से जिंदा होने का, और वो जो जिंदा और बचा हुआ कश्मीर है, इन टर्म्स ऑफ आइकोनोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके पास है क्राफ्ट्स, वो या तो रूइंस की शक्ल में कश्मीर में है, या किताबों में है, या अमेरिका यूरोप के म्यूजियम्स में है। आप जब आर्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखेंगे, जहां आप एकदम गर्व करते हैं, वहां रोना भी आता है। क्या हुआ है? मार्तन टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सिकंदर बुतशिकन, द फादर ऑफ ग्रेट बादशाह। साल भर तक उसमें जंगल जलाया गया, वो टूटा नहीं, क्योंकि इतनी रिच ट्रेडिशन है कश्मीर की। आप नीलमत पुराण रेफर करिए तो वहां लिखा है एक में, on one particular day of Ashada, statue of Keshwa should be made of clay, stone, copper, gold, and brass. Also be painted on cloth. जैसे आज म्यूरल और जो आप जंगपो ने 108 मोनेस्ट्रीज में जो आपको म्यूरल्स मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलते हैं, all done by Kashmiri Pandit monks who were painters, artists. Even Alchi, who were those? They were our ancestors. जो चाइना में यांगकोंग केव्स में, तिब्बत में, अभी कहा गया अब काफी, it was vast expanse of jnana, of light, enlightenment. प्रकाश लेके जाओ पूरी दुनिया में। यहाँ प्रोफेसर एस हटिंगटन अपनी किताब आर्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें लिखते हैं इवन इनर एशिया में भी जो आपको आर्ट मिलता है, आइकोनोग्राफी मिलती है, टेम्पल आर्किटेक्चर मिलता है, it has deep impact of Vastu Shastra from Kashmir. It has deep impact of Natya Shastra, जिस पर अभिनव भारती लिखी गई. Deep impact of Chitra Sutra. Chitra Sutra is mentioned in Vishnu Dharmottar Purana.
कश्मीर वॉज मोर देन मिनी ईरान, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, इट वॉज इंडिया। एंड जिस ईरान की आप बात कर रहे हैं, दैट वॉज कल्चरल पार्ट ऑफ ग्रेट इंडिया। Gandhar impact is Gandhar. Gandhar was cultural part of India, civilizational part of India. Iran is Aryan. एक, चूंकि हमारा टॉपिक सिविलाइजेशनल, कल्चरल और फिलोसॉफिकल है, इसलिए मैं इस दशा में थोड़ा जा रहा हूं। देयर इज अ बुक, वेरी गुड बुक, और राव जी यहाँ बैठे हैं, अगर ये कंसिडर करें तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाइए। दिस इज अ बुक बाय श्याम सिंह से, उत्तराखंड में मुझे मिली। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। क्या किताब है, मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। मेरे पास 2-3 हज़ार किताबें हैं घर में आज भी, जलने के बाद भी। आई लॉस्ट कश्मीर इन टर्म्स ऑफ माई बुक्स, इन टर्म्स ऑफ माई हेरिटेज, इन टर्म्स ऑफ माई कंटिन्यूटी, historical, civilizational, philosophical continuity। और वो किताब है, उसमें बहुत डिटेल और साइंटिफिक अप्रोच है उस किताब का, हिंदी में है। उसमें लिखते हैं कि देवों और असुरों के बीच एक युद्ध अग्नि को लेके हुआ। पहले समाधि देते थे, जैसे हमारे मुसलमान भाई कब्र में दफन करते हैं शव को, या पानी में जल समाधि होती थी। जिस दिन यह डिसीजन लिया गया कि अग्नि में दाह किया जाना चाहिए, उसका विरोध हुआ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। देयर आर रेफरेंसेस। विरोध यह हुआ कि डो विल नॉट अलाउ यू टू इम्प्योर द सेक्रेड अग्नि, एंड अग्नि इज द प्रिजाइडिंग डीटी, वैदिक डीटी, एंड ऋग्वेद बिगिंस विद द फर्स्ट वर्ड अग्नि, अग्निमीले पुरोहितम। अग्नि इज द प्रिजाइडिंग। हम इसको इम्प्योर नहीं करने दें। आज भी पारसी लोग आपको अपने अग्नि के पास नहीं जाने देंगे, इफ यू आर अ नॉन पारसी। वो रेशियल मेमोरी है उनकी। यहाँ मुंबई में देखिए, मेरे कई फारसी मित्र हैं, तो उसमें जो वॉर हुई देवताओं और असुरों में, उसमें असुर हार गए। एक ब्रांच पहाड़ी असुरों का भागते भागते ईरान तक गया, वहां सेटल हुआ, वहां ज़ेंडावेस्ता लिखी। ज़ेंडावेस्ता और ऋग्वेद का स्टडी करिए, आपको सिमिलरिटी मिलेगी, संध्याएं मिलेंगी, दरिया मिलेंगे, नदी सूक्त मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और एक ब्रांच कश्मीर में आता है। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, इनके लिए मैं देता हूं, इन जानती होंगी कि जब कश्मीर में रिचुअल आप करते हो, हवन इत्यादि, जब पुरोहित, शुरू में, आज के पुरोहितों को तो पता ही नहीं है, ना आज के यजमानों को पता है, वो पहला प्रश्न पूछते थे यजमान से, आर यू साग्नि और निराग्नि? क्या आप साग्नि हो, अग्नि को मानने वाले, या निराग्नि हो? ये एक डिवीजन है, तो उसके हिसाब से पूजा होती है। ये साग्नि कौन थे, इसका कनेक्शन कहीं उस युद्ध के साथ जुड़ता है, ये एक एस्पेक्ट है। और जो ये अभी प्रावरण की बात सत्यभामन की बहुत सही कि ये करेक्ट है। प्रावरण ऐसा पोशाक जो आपको लपेट के गर्मी देता है विंड से, हवा से। ये जब ईरान पहुंचता है, ये शब्द देखिए, जैसे हम ट्रैवल करके आए, कश्मीर से आए, जम्मू से आए, कोई कहीं, वैसे शब्द भी ट्रैवल करते हैं। प्रावरण जब ईरान पहुंचता है, ईरान से ये पैराहन बनता है, और पैराहन हमारे यहाँ फेरन बनता है। आपो वही प्राणः, आपो इज वाटर, एंड कश्मीरी मुस्लिम्स कॉल वाटर आब। आब is आप, Sanskrit, and we have Rigvedic roots of Kashmiri language. It's not Dardic. And Sir George Grierson was wrong and proven wrong. जब उन्हें कहा कि ये दार्दिक नहीं है। My teacher, my guru, Dr. T.N. Gunju, who spent more than 20 years on this topic, origin and development of Kashmiri language, he proved it. कि इसके रूट्स जो हैं ऋग्वेदिक में हैं। इवन देयर आर सम लिंग्विस्ट्स जो कहते हैं कि इट्स प्रोटो-वैदिक, उससे भी पुराना है। और वोकेबुलरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई अचीवमेंट नहीं होती है। हम बातचीत करते हुए कई अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई इसमें बोलते हैं, इसमें कोई नहीं होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए
क्या दुनिया में, संसार में कोई ऐसी भाषा है जिसका ग्रामर दूसरी भाषा का हो, उस पर जिंदा हो? जैसे मेरा सोल मेरा है, आपका सोल आपका, आपकी बॉडी में। हर भाषा का अपना सोल, अपना ग्रामर अपना होता है। और इसी तरह हर देश का अपना काव्य शास्त्र होता है, वो दूसरे देश का नहीं लाता है। हमने सोक्रेट को पढ़ा है, हमने अफलाटून को पढ़ा है, इन सबको पढ़ा है। जो आपको एस्थेटिक्स वगैरह की जो स्टडी है, हमारे यहाँ काव्य शास्त्र है। और 6 के 6 स्कूल काव्य शास्त्र के कश्मीर से आए हैं। यहाँ कहा भी गया, अलंकार स्कूल फ्रॉम कश्मीर, रसा फ्रॉम कश्मीर, वक्रोक्ति फ्रॉम कश्मीर, रीति फ्रॉम कश्मीर, ध्वनि फ्रॉम कश्मीर, औचित्य फ्रॉम कश्मीर. Progenitors of these schools, majority of them are from Kashmir. Kayyat, Rudrat, Lallat, Mayyat, Ruyak, Bhamaha, Mammat, Anandavardhan, above all, Mahamaheshwaracharya Abhinav Gupta, man of the millennium. क्योंकि टॉपिक आया, वितस्ता की बात चल रही है, उसके अंडर में ये बोलना ही बोलना है आपको। जब आप लिटरेचर्स की बात करोगे तो हाउ कैन यू इग्नोर कश्मीर बीइंग द हाईएस्ट सीट ऑफ हाईएस्ट लर्निंग, वाज नोन एज शारदा देश। ये बिल्हन ने आपके यहाँ कर्नाटक में आकर कहा विक्रमांक देवचरितम में कि मैं कहाँ से आया हूँ, वहां से आया हूं कश्मीर से। कर्नाट राजा के पास दरबारी कवि था, जहां की स्त्रियां 3 भाषाएं एक साथ बोलती हैं, संस्कृत, प्राकृत, जन्म भाषा वदेव, 3 भाषाएं फ्लुएंटली बोलती हैं कश्मीरी विमेन। और मैं वहां से आया हूं जहां सहोदरा कुमकुम केसरा नाम भवंति नूनम कविता विलासा। मैं ऐसी जगह से आया हूं जहां कविता, काव्य और कुमकुम सहोदर हैं। और ऐसी कश्मीर की भूमि की प्रिजाइडिंग गॉडेस जो है, गॉडेस ऑफ लर्निंग, दैट शारदा, जो 64 कलाओं की तो है ही है। शायद हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, शी इज ए गॉडेस ऑफ वॉरफेयर ऑल्सो। अगर शास्त्र आपके पास है तो शस्त्र भी होना चाहिए, अपने ज्ञान को बचाने के लिए शस्त्र भी चाहिए। यही कृष्ण ने कहा 700th में कि आपको जहां योगेश्वर कृष्ण हो, यहां धनुर्धरी अर्जुन हो, वहीं आप बचते, वहां विजय है। हमने शायद प्रोटेक्शन करना, प्रिजर्वेशन करना छोड़ दिया। इस कारण से हम सब्जुगेट हुए, एनस्लेव हुए। मैंने अभी कहा अरब में जो ये बरमुख से, वो कश्मीरी पंडित प्रमुख हैं। दे वर नॉट किल्ड, देयर सर्विसेज, इनके लिए ट्रांसलेशन करो, एंड यूरोप तक चले गए। इसी तरह कितने लोग, हजारों लोग एनस्लेव हुए। भरा पड़ा है इतिहास जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने दिया है संसार को, उसके एवज में जो हमको सेंट्रल एशिया के रास्ते मिला। फारसी लिटरेचर भी आया, नया थॉट प्रोसेस आया, करंट्स आई, दैट्स ऑल राइट। बट वहां से वायलेंस भी आई, वहां से डिस्ट्रक्शन भी आई, वहां से वो सब आया जिसके हम शिकार हुए 600-700 साल से, सब लोग, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में स्प्लिट आया। पर्सनैलिटी में स्प्लिट आया हमारे लोगों में। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ हांगलू साहब बैठे हैं, इतने विद्वान लोग बैठे हैं, जो मेरा स्टडी है कश्मीरी फोकलोर को कंपाइल करने के बाद एनालिसिस करने का, वो ये है कि हम में से एक सेक्शन इज विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कन्विक्शन। वो ये भी है और ये भी है। वो हेरिटेज भी लेना चाहता है 5000 ईयर्स ऑफ कश्मीर, और उसको लगता है ये नहीं लेना चाहिए, वो बेचारा उसका कॉन्फ्लिक्ट में है। एंड दूसरा सेक्शन जिन्हें कश्मीरी पंडित कहते हैं, उनमें एक प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है सारी, उसका एक्सप्रेशन आप देखिए कैसे। दे वर नोन फॉर देयर एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी। अब वो क्या करें?
जब फोर्सफुली आपको कन्वर्ट किया जाए, फोर्स ऐसी सिचुएशन बनी जाए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपके अराउंड प्लेस कॉन्शियसनेस देखिए, आपके पास भट्ट मजार है, आपके पास कई फोक में कई चीजें हैं जो रिमाइंड करती हैं कि व्हाट द हेल आवर एंसेस्टर्स हैव गॉन थ्रू। तो ऐसे में क्या है, आप में एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स इमीडिएटली आपके बिहेवियरल पैटर्न बदलता है और आप एक स्टॉकहोम सिंड्रोम की तरफ जाते हैं। आपसे गलत हो रहा है, आप कह ही नहीं रहे हैं गलत हो रहा है, अंदर से बड़े हर्ट हैं। हाँ हाँ, दाले बटा भी आपको कहा जाता है, बाहर से कहते हैं हाँ यार श्योर पानोगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से हर्ट है। Why I was called a दाले बटा, दाल खाने वाला? Because I was a दयालु बटा। For 1000 years कश्मीर में बुद्धिज्म था, एंड द कोर ऑफ बुद्धिज्म जो है वो है दया, कंपैशन। यू आर कंपैशनेट, दयालु। भट्ट, व्हाट्स भट्ट? भट्ट इज द फॉलोवर ऑफ भट्टारका। भट्टारका इज द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा। भट्ट मीन्स अथॉरिटी, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चांसलर वगैरह। युद्ध भट्ट। अभी भी आप बात करते हैं, किसी विद्वान स्पीच सुनते हैं या वो कोई कहते हैं यार ये बड़ा उद्भट विद्वान है, ही इज अ विद्वान लाइक कश्मीरी पंडित। ये डेज थे पास के। ऐसे में जब आप पलें, आपको रहने से ज्यादा सहना जब पड़े, तो आपकी पर्सनैलिटी पर उसका इंपैक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कन्विक्शन का पर्सनैलिटी में आता है। उसके बाद जो पॉजिटिव चीज है, सिल्वर लाइनिंग है, वो हमारा लिटरेचर, कॉमन विरसा, कॉमन हेरिटेज, कॉमन जिसकी आपने अभी बात की, गायन, थोड़ा फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे भाई ने कहा हम शुक्लम कृत कहते हैं, वो रिप्लेस हो गया बिस्मिल्लाह कृत। डजंट मैटर, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ अल्लाह, यहाँ इन द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा। लेकिन जो चीजें हैं उनका फॉर्मेट बदला है। As a student of folklore, sociology of folklore, मोटिफ नहीं बदलता है, आर्किटाइप बदलता है। टोटेम्स कुछ रहते हैं, कुछ बदलते हैं। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ कश्मीर इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी की बात ही तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि कश्मीर इटसेल्फ, जो मैंने कहा अभी, यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, ये जो उमा है गॉडेस, वही कश्मीर है। ये तो सेक्रेड फीलिंग्स एक प्लेस कॉन्शियसनेस के साथ है। उसके साथ लॉर्ड कृष्णा सपोज टू हैव सेड, नीलमत पुराण में है, आपको यहाँ मिलेगा, कलहन के पास मिलेगा। वो कहता है कि कश्मीर की धरती जो है ये साक्षात पार्वती है। अब जिस भूमि के साथ इतनी सेक्रेड आपकी सेंटिमेंट और सेंसिबिलिटी जुड़ी हो, उसके कल्चरल एक्सप्रेशंस, सिविलाइजेशनल एक्सप्रेशंस, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, लिटरेरी एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं उसके साथ जरूर जुड़े होंगे। जैसे तंत्रालोक की अभी बात हुई, हमारे पास जो फिलोसॉफिकल लिटरेचर का फंड है, उसके सबसे बड़ा सरफहरिस्त जिसको उर्दू वाले कहते हैं, दैट्स तंत्रालोक। 8 वॉल्यूम्स मैंने 2 बार खरीदा। एक बार कश्मीर में था, तो जब कश्मीर से निकलना पड़ा तो वहीं रह गया, जल गया, तो तब भी वहाँ की राख में है। तंत्रालोक की राख मेरे आंगन में है। जम्मू में आकर के मैंने फिर से खरीदा, और मेरी बच्ची की जब शादी थी, मेरी बेटी की, शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज एन एक्टर, थिएटर पर्सनैलिटी, फिल्म एक्टर, तो मैंने उसको डॉवरी में 8 वॉल्यूम तंत्रालोक के दिए। मैंने उसको अभिनव भारती के 4 वॉल्यूम दिए। मैंने कहा बेटा ये एक बाप दे सकता है अपनी बेटी को, सारी विरासत है। और मेरी मिसेज ने जब पढ़ना शादियों वादियों की सारी एंगेजमेंट एक और करके पढ़ना शुरू किया, कैन यू बिलीव मी, 1.5 साल उसको लगा 8 वॉल्यूम पढ़ने में। यहाँ तो
कई कई जगह लोग बिना पढ़े ही बातें करते हैं, कट पेस्ट इधर उधर, और उसके बाद भी हिम्मत नहीं होती उसकी तंत्रालोक पे बात करने की, क्योंकि आचार्य अभिनवगुप्त से बड़ा प्रामाणिक, ऑथेंटिक, ओरिजिनल थिंकर और इतना एनालिस्ट कलाओं का, सौंदर्य कला का, सौंदर्य शास्त्र का आज तक नहीं हुआ है कोई, जितना महामहेश और आचार्य अभिनवगुप्त हुए हैं। फिर आपके पास परमार्थ सार है, फिर आपके पास शिव दृष्टि है, तंत्र साहित्य है, मालिनी विजय तंत्र है, स्वच्छंद तंत्र है, नेत्र तंत्र है, आपके पास विज्ञान भैरव है। बात की सतीश ने की विज्ञान भैरव के 112 सूत्रों की, विस्मयो योग भूमिका, इस पे कोई बोलने लगे तो पूरा दिन निकल जाए। आपके पास शिव सूत्र है, फर्स्ट चैतन्यम आत्मा, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। वो क्या है? शैव कहता है इट्स ऑल कॉस्मिक, जो एक्सपेंशन है, परवेसिवनेस है, दैट इज द शिवा। शिवा कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांडीय चेतना से बाहर कोई नहीं बचता है। इसलिए ललित की, हमारे मित्र ने, एक वक्ता ने बात की, ललित में ये ड्युअलिटी नहीं है। जो ललित ये कहेगी ध्यान से पवन से सो सकल से ये सकल तो लगेगी क्या। नाउ इंटरपोलेशन हैं, कुछ वाक इधर किए जाते हैं, कुछ उधर किए जाते हैं, जैसे तलशी जुस्ते पेटुक नचान वंत माले अनकित पचानशी सोरी समृत ये मचा वंत माले अनकित पचान, ये ललित का है भैया, उधर चला गया है। ये होता रहता है बड़ी, इसमें 2-4 वाक तो इधर से उधर, उधर से उधर है। और मैंने एक बार कई मित्रों से कहा, मैंने कहा नुंदऋषि, जिसका नाम नहीं लिया मेरे मित्र ने, मुझे बहुत बुरा लगा, खाली शेखुल आलम, शेखुल आलम, हु डिनाइज ही वाज ए शेखुल आलम, शेखुल आलम मीन्स जगत गुरु, वो कौन नहीं कहता है, लेकिन आपने एक बार भी नुंदऋषि नाम नहीं कहा, जो कि कॉमन शब्दावली में नुंदऋषि बोलते हैं। शेखुल आलम से रेस्पेक्ट। तो नुंदऋषि की भाषा क्या होनी चाहिए? वो ये नहीं है जो हम कोट करते हैं नूरनामाज में से, व्हेन वर नूरनामाज कंपाइल्ड, और जो उसकी भाषा है उसका एक संकेत है, तस पदमान पोरिच लले ये अमृत गले पिबो, स्वयं सैन अवतार लले, अब कहते हैं अवतार नहीं लले, जो भी है। एक अलग जॉनर है, ये भारतीय भक्ति संवेदन का साहित्य है। उसमें हमारे कई सामने आए, परमानंद, कृष्णजू राजदान, गोविंद कोल, आपताबजू सास भास्कर से लेकर के भवानी अध्याय तक, ये अलग। भारतीय भक्ति संवेदन, हमारा एटीट्यूड क्या है गॉड के साथ, व्हाट्स द रिलेशन, और उसके साथ उसके बाद वी हैव 8 रामायणास इन कश्मीर, विष्णु शर्मा रामायण, दिस प्रकाश राम रामायण, नीलकंठ शर्मा रामायण, 7-8, और इस विस्थापन में कैंपों में 2 और रामायण सामने निकले जो वहां से ले आए थे। एक तो रिसेंटली परदेसी, इनका दैट पॉइंट वाज किल्ड, सर्वानंद कौल, उन्होंने रामायण लिखा, वो भी आया है अभी। सो देयर इज ए ट्रेडिशन, जो रिलीजियस साहित्य की आप बात करते हैं कश्मीरी साहित्य में, एक तो लीला संप्रदाय है, फिर उसमें रामायण है 7-8, और इधर उसके पैरेलल में जैसे हमारे भाई ने नातों का कहा, मनकबत कहा, मनाजात का, ये भी साहित्य है। लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग साहित्य है सूफी साहित्य, जिसमें न्याम सब है, स्वच्छकराल है, रामांडार है, वाज महमूद है, और अब्दुल हद जरगर, ऐसे कितने लोग हैं जहां आपको डेप्थ मिलेगी कश्मीरी तसव्वुफ की और कश्मीरी दृष्टि की।
कश्मीर का सूफी शायर और सेंट पोइट कैसे चीज़ों को देखता है, कैसे वो सारी चीज़ों को लेके आगे चलता है बिना डर के। कईयों को तो कुफ्र भी मिला है, जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेरे बहुत प्रिय कवि गुलाम अहमद आज़ाद, उनको तक भी कुफ्र मिला था। गीता ही क्या खता कुरवंतम कुरान वाले, कुफ्र मिला उसको। एक कुफ्र वुफ्र मिलने के बावजूद जो सूफी कवि खड़ा है तो अपनी मस्ती के साथ खड़ा है, परवाह नहीं करता है। कुसु मरे तो कसु मारन, ये ललदेव का मैसेज है यार। किसको मरेंगे, कौन मरेगा, कौन मारने वाला और क्यों मरेगा? वही जो सच्चाई के रास्ते से हटके घर घर यूज करे, हर 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 त्रैवित यूज घर घर करे तो इस मारन तुम्हारी सुई। ये आपके बैकग्राउंड में जब है, ये आपकी फिलॉसफी जब है, ये आपका इंसाइट जब है, आप दुनिया के सबसे निडर, बेखौफ और सबको प्यार बांटने वालों में गिने जाते हैं। नंद ऋषि के श्रुख देखिए, श्रुख इस श्लोका, और दूसरा वर्ष श्लोक का करप्ट फॉर्म है श्रुख, श्रुख साहित्य। वो कहां से ले आते? नंद ऋषि जब पैदा हुए, बड़े हुए, तो हेरिटेज क्या थी उसकी, पेरेंटेज क्या थी उसकी? श्रुख ही था ना, श्लोक थे। और दूसरा है, अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ एक चतुर्थी हुई, शारदा का जन्मदिन हुआ, उसको बोलते हैं श्रुख सोरम। इस दिन क्या होता था, गुरु अपने बच्चे घरों में आते थे और बच्चों को वो विद्या आरंभ के लिए श्लोक पढ़ाते थे या सुनाते थे। ये ट्रेडिशन होने से उस चतुर्थी का नाम श्रुख सोरम पड़ गया। बिकॉज यार हमारे पास गन वन ये छोड़िए, जब उठाई तो तब टर्की तक चले गए ललतादित्य के रूप में, लेकिन जनरली आपने प्यार बांटा, ज्ञान बांटा, कविता बांटी, कलहन दिया, बिलहन दिया। आपने श्रीवर की बात की, जोनराज की नहीं की, जोनराज दिया, प्राज्यभट्ट दिया, आपने काव्य शास्त्र दिया। मैंने कहा ना अभी 6 के 6 स्कूल आपने दिए, भामा, ठंडी इत्यादि। ऐसे कश्मीर में जब वितस्ता हमारी लाइफ लाइन है, और वितस्ता पे दीनानाथ नादिम का ओपेरा है, शायद यहां भी होने वाला है, संग्रह गाशुत खन्य ललवनिए व्यथाई माहरीन सोनिए। ऐसी ललदत जो हमारी रगों में बहती है। और मैंने कश्मीर में ही 89 में एक पोइम लिखी थी, वितस्ता का जन्मदिन। उस वर्ष कोई भी कश्मीरी पंडित अपने दरिया के घाट पर नहीं उतरा था, न कोई दिया बहा था, न कोई फूल बहे थे। जिस दिन दूध बहता था गंगा वितस्ता में, डर था, दहशत थी, आतंक था, आतंकवाद था। और मैंने उस पॉइंट पर उसकी उदासी को लेकर के एक पोइम लिखी, वितस्ता का जन्मदिन। और उसमें एक जगह वो कहती है कि तू तो अब जा रहा है, मेरे पास आया है, तू कब आएगा रे, हाथ में दिए लेके, फूल लेके, दूध लेके। मेरे मित्रों, मेरी दूसरा कविता संग्रह है, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी। मैंने आज तक अपनी कोई इतनी, यहाँ 8 कहा गया, मेरे 12-13 कहानी संग्रह, कविता संग्रह, मैंने किसी से विमोचन नहीं करवाया अपनी किताब का। आई डोंट कंसिडर एनीबॉडी वर्थ माई पेन। इट्स ब्लड पोइट्री, पोइट्री ऑफ जेनोसाइड, पोइट्री ऑफ एक्सोडस। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? लेकिन मैं सीक्रेटली कश्मीर गया, हब्बा कदल, जहां वितस्ता नीचे बहती है, सिक्योरिटी ली बीएसएफ की, ट्रैफिक जैम हो गया, उधर से भी ट्रैफिक बंद, इधर से भी ट्रैफिक बंद। मैं जिसे कहते कश्मीरी में कहते हैं सिनिर करित, कफन बांध कर सिर पे, मैं लौटूंगा नहीं। मैंने 3 चिट्ठियां घर में लिख के छोड़ी थी, शायद मैं नहीं आऊँगा, मारा जाऊँगा, लेकिन मैं हब्बा कदल पर पहुँचकर एक फूल और अपनी किताब मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, और मेरे मित्र महाराज कृष्ण संतोषी की भी किताब, ये समय कविता का नहीं, हब्बा कदल से विसर्जित की वितस्ता में। जिस वितस्ता ने मुझसे
पहली कविता में कहा था, बेटा जब आओगे क्या फूल लेके आओगे, लेकिन मैं कविताएं लेके गया। मैंने कहा, हे माँ, मैं तो बाहर हूं, लेकिन मेरी सारी आत्मा यहां है, तुम्हारे पास है, क्यों तुम हम अंदर बहती हो मेरे। इसलिए ये जो बहना है, और इसके बहाने आपने जो आपकी यात्रा कराई, जर्नी कराई आज वितस्ता फेस्टिवल के माध्यम से, आपने फिलोसॉफिकल टेक्स्ट की बात की जो अभी है, उसके बाद हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट में पंचस्तवी है, भवानी सहस्त्रनाम है, और यहाँ मेरी बहन अद्वैतवादिनी बैठी है, इनके स्वर्गीय पिताश्री ने बहुत रिमार्केबल अमेजिंग काम किया है ऐसे टेक्स्ट पे। जानकीनाथ कौल कमल, ये इसमें आता है। उसके बाद महात्म्य है। ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसका महात्म्य नहीं है? जितने बचे हैं उनको कंपाइल करके ट्रांसलेट करवाइए, छपिए। हर मुख का महात्म्य, खीर भवानी का महात्म्य, और पूरी खीर भवानी आपके श्रीलंका यहाँ पास में ही है। वहां से हनुमान जी एज पर लीजेंड along with 360 नागाज बाय एयर कश्मीर आती हैं, और पहला स्टॉप ओवर वहां है मंजगाम, उसके बाद दिवसर, उसके बाद यारीपुरा, यस आई एम कंक्लूडिंग, यारीपुरा इत्यादि वगैरह वगैरह। तो इसमें एक टोपोग्राफिकल अकाउंट है। ऑल द महात्म्यास प्रोवाइड ट्रेडिशनल, माइथोलॉजिकल एंड रिचुअलिस्टिक प्लेस कॉन्शियसनेस। इसकी कंटिन्यूटी के लिए महात्म्य इसमें आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर पुराणाज हैं, जैसे नीलमत पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण इत्यादि। फिर कश्मीर की मैंने बात की। और मैं 1 मिनट में बंद करूंगा, ये इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं ये ना कहूं कि कश्मीर का आर्ट्स जो कहा गया ना, इवन यहाँ चेन्नई में बैठे मेरी बहन ने शुरू में कहा था, आई एम रिमाइंडेड ऑफ कश्मीर, ये देख करके। अगर आप वास्तुशास्त्र का अध्ययन करें, नाट्य शास्त्र में देखें, इवन इन साउथ इंडिया जो हमारे यहाँ के टेम्पल आर्किटेक्चर, आइकोनोग्राफी और भंगिमाएं हैं, 3 भंगिमाएं उसमें कहीं हैं नाट्यशास्त्र में, वो तीनों आपको यहाँ मिलेंगी। इतना ही नहीं, या मैंने कहा मंगोलिया में भी, यहाँ साउथ एशिया में भी, जिसके नाम यहाँ गए मैं दोहराऊंगा नहीं, आपको कश्मीर के वास्तुशास्त्र का, नाट्यशास्त्र का, चित्रसूत्र का इम्पैक्ट मिलेगा। आप आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसी चीज़ें आपने बहुत कम समय में सामने रखने का सब विद्वानों ने कहा। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। इतना माइंड बॉगलिंग प्रेजेंटेशंस यहाँ हुई। सब विद्वानों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से कश्मीर को देखा। कश्मीर को देखना, खासकर कश्मीरियों के लिए, वो चाहे कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई हों या पंडित हो, कश्मीर को देखना खुद को देखना है। खुद को जानना है तो कश्मीर को जानो। और जैसे कि रतन हांगलू ने सवेरे कहा, कश्मीर वॉज नॉट बॉर्न इन 14th सेंचुरी। इसके बियॉन्ड जो हजारों साल का आपके पास कैलेंडर है, 5099 इतने हैं आपका कैलेंडर है, तो 5000 साल से ज्यादा आपके पास इंटीग्रेटेड हिस्ट्री है, ये किसी के पास नहीं है। अलाउ मी टू से दिस थिंग, आपके पास जो हर 2.5 साल के बाद अधिक मास आता है, 13 महीनों का 1 साल, इसका कॉन्सेप्ट कश्मीर में सूर्य मंदिर मारतंड में 7 ऋषियों ने बैठ के तय किया है, तभी इसका संवत कहा जाता है। सप्तऋषि संवत, जो भारतीय काल गणना में आपका कंट्रीब्यूशन है। ईश्वर करे कश्मीर से खतरों के, नेगेटिविटी के, डिस्ट्रक्शन के, डेथ के बादल हटे, कश्मीर फिर से फ्लोरिश हो जैसे वितस्ता बहती है, बहती रही है। कश्मीर की वितस्ता विश्व भर के लिए एक शांति का, भाईचारे का, सह अस्तित्व का संदेश लेकर बहे। हम तो संदेश साहित्य अकादमी के जरिए, राव साहब के जरिए यहाँ तो आए हैं, और इसी भूमि से आचार्य महामहेश्वर आचार्य अभिनव बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे मधुराज, वो यहीं से कश्मीर गए थे। तो रिलेशन हमारी
पूरे भारत की एक है, एक हृदय हो भारत जननी। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you very much, sir. Now I request all the 10 participants who are present here to come to dais for group photograph. Raina sir. Dais mein group photo ke liye. Only all of you, only 10 of you, please come. 10 people, please come for a group photograph. Are Indian? No, it's okay, sir. No problem, ma'am. Now I request Dr. Revati Ramachandran, Director Kalakshetra, to felicitate one by one. Okay, Pakala Ramdas sir, please come. Please go. Dr. K. Srinivasa Rao. Sir, please, all of you, please be here only. Please be here only, sir. Madam. Dr. C.K. Garyali. Ratanlal Hangu. Advaita Vadhini Kaul. Ajaish Muhammad Shaikh. Satish Vimal. Satyabama Razdan. Gauri Shankar Raina. Gulam Rasul Jan. And Sri Agni Shekhar. You finish? No. Okay, thank you. Agni Shekhar. So thank you very much, everyone, for making this a wonderful seminar. Thank you.